Good morning, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. In today's video, we would be covering some of the most important current affairs for the upcoming CDS examination or even the CAPF examination. But this is for the CDS only, 2026 first attempt, right? So without wasting much time, let's start the video. So very first news that we should be very aware of is कि अभी सागर बंधु ऑपरेशन हुआ था एंड इट वाज फॉर श्रीलंका बिकॉज श्रीलंका में अभी एक साइक्लोन आया था विच इज नो नेम्ड एज साइक्लोन दितवा। और एक जो हमें इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है द नेमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर साइक्लोन दैट इज दितवा वाज नेम्ड बाय यमन, राइट। और इसमें जो हमने हेल्प प्रोवाइड करी थी सागर बंधु के तहत, इसमें हमने दो हमारे वेसल्स गए थे नेवी की तरफ से। वन वाज INS Vikrant and another one was INS Udayagiri, right? So this is very important, right? हमें दोनों चीजों का नाम पता होना चाहिए, right? Now after that, an important news from military point of view is that we have recently inaugurated and started the Neoma Air Base, right? And this was built by BRO. और ये कितनी फीट पर है? It is on around 13,000 feet, right? And an interesting thing to note about Neoma Air Base is that ये ऐसा एयरबेस है जहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी लैंड हो सकते हैं। और ये कहाँ पर है? हमारा लद्दाख में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट्स द आईनी एयरबेस। ये एक हमारा ओवरसी एयरबेस था जो हमारा कहाँ पे था? तजिकिस्तान में, राइट। और इसको हमने एयरफोर्स ने अब इसे बंद कर दिया है। इट इज नाउ क्लोज्ड, राइट। सो इट इज नाउ क्लोज्ड, राइट। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक ओवरसी एयरबेस था जो हमारा तजिकिस्तान में था एंड नाउ इट इज क्लोज्ड, राइट। मूविंग ऑन, अभी हमने रिसेंटली फोर्टिफाइड राइस। नाउ व्हाट इज फोर्टिफाइड राइस? सो बेसिकली फोर्टिफाइड राइस आर अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ राइस जो कि काफी अच्छे होते हैं, राइट। एंड ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है? दिस इज बेसिकली फाउंड इन छत्तीसगढ़। और हमें ये पता है कि छत्तीसगढ़ को ही हम क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, राइट। एंड वेयर डिड वी शिप दिस फोर्टिफाइड राइस? इट वाज टू रिका कोस्टा रिका, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Now moving on, that 9 चीताज अभी 9 चीते मंगाए हैं। कहाँ से? बोत्सवाना से। और ये कहाँ पर आए हैं? जो 9 चीते आए थे वो आए थे हमारे कूनो नेशनल पार्क में। और राइट नाउ देयर, राइट, कूनो नेशनल पार्क में आया था। कूनो नेशनल पार्क किधर है? मध्य प्रदेश में, राइट। और ये जो करा था, लाइक आई गेस जो हमारा प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, सो उनकी शायद से विजिट थी इधर। एंड सो या इम्पोर्टेंट चीज ये कि 9 चीता आए थे हमारे। कहाँ से आए थे? बोत्सवाना से आए थे। और ये कहाँ पर आए? कूनो नेशनल पार्क में। मूविंग ऑन, अभी एक जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर हमारे एडविन लुटियंस की स्टैच्यू था, उसको हमने रिप्लेस करा है किससे? सी गोपालाचारी। उनका स्टैच्यू प्लेस करा है राष्ट्रपति भवन में। मूविंग ऑन, अभी एक रिसेंटली एक और साइक्लोन आया है, साइक्लोन गजनी, एंड इट वाज इन द मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, राइट। सो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है। वो कहाँ से हुई है? हावड़ा, दैट इज इन कोलकाता, एंड गुवाहाटी, दैट इज इन आसाम। सो यहाँ से हावड़ा से गुवाहाटी गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर 2026 को क्या कौन सा ईयर डिक्लेयर करा है? सो दे हैव डिक्लेयर्ड this 2026 as an year of rangelands and pastoralists, right? So this is very important. Now coming towards the ISRO part, that's the space related. So हमारा जो इसरो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च करी है एंड दैट इज नोन एज द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। एंड दिस इज वन ऑफ द heaviest सैटेलाइट दैट इसरो हैज launched through its launch vehicle LVM-3, LVM-M6, राइट। सो ये बहुत, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं हम इसी को, राइट। अब
सेम न्यूज एक और हमारी ये है कि हमारा हमने भी CMS-03 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि वन ऑफ द हैवीएस्ट है। वो भी हमने इसरो ने लॉन्च करी एंड इट वाज थ्रू LM LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च करी है। अब एक चीज यहाँ पे दोनों जगह हैवीएस्ट लिखी है, राइट? But the catch is that this one, that's a Blue Bird Block 2, it is a foreign made. That is, ये this is not an indigenous satellite, right? While the CMS-03 ये एक indigenous satellite है, right? और ये हमने कहाँ पे जियो ऑर्बिट में लॉन्च करी, while this was in the lower orbit, right? Moving on, दीपावली को हमने दीपावली has been inducted into the UNESCO's intangible cultural heritage and community, राइट? और इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये तो है कि दीपावली को हमने उसमें यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड करा है। वाइल 20th यूनेस्को इंटर गवर्नमेंट कमिटी, जो ये मीटिंग थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी न्यू दिल्ली में, राइट? मूविंग ऑन, एक अभी रिसेंटली एक साइक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था एंड दैट वाज माउंट माउंट गाइली गुबी एंड दैट्स अ डोरमेंट, वो एक डोरमेंट वॉल्केनो था विच इरप्टेड इन इथोपिया। एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज दैट जो उसका रेसिड्यू था, दैट्स द SO2 गैस, और जो भी ऐश के रेसिड्यू थे वो इंडिया तक पहुंचे थे when this volcano was erupted. So it is Mount Gaili Gubi and this is in Ethiopia. Right? Now parasocial को हमने was declared as a Cambridge word of year 2025. Right? अब this is important. That's the सिक्किम का जो सिक्किम की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है which are called the tumbuk and pum pumtong pullet. They have been given the GI tag. So GI tag, as we all know that they are very important, right? So these are being asked in our examination. So from our examinations point of view, it is very important. हमने जी CMS-03 के बारे में बात कर ली कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड it is one of the heaviest satellites and heaviest in the terms of indigenous one, which has been launched by LVM-3M5 rocket. Right. Moving on, यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको डिक्लेयर करा है? इट इज टू सिटीज, वन इज लखनऊ एंड अनदर वन इज हैदराबाद। दोनों के दोनों बेसिकली कॉल द सिटी ऑफ नवाब्स कहते हैं हम इसे, राइट? मूविंग ऑन, क्राफ्ट, सिटी ऑफ क्राफ्ट किसको डिक्लेयर करा है? श्रीनगर, दैट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एंड जयपुर. They have been declared as the city of crafts. While if we talk about the city of literature, it is Kozhikode. And if we talk about the city of music, तीन cities हैं, ग्वालियर, वाराणसी एंड चेन्नई. अभी हमारे तीन ports हैं, right, which have performed very good and they are declared green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission. So first one is Deen Dayal, that's in Gujarat. This was the first one. Another one is Paradip Port, that's in Odisha. And third one is this Chittambaram, that's in Tamil Nadu, right? So these are very important. कि तीन को हम ग्रीन हाइड्रोजन हब की लाइक दे हैव बीन अवॉर्डेड. मूविंग ऑन, as we all know that one of the most advanced telescope, that's the Telescope, it has discovered a new thing that's called Cloud 9, right? Moving on, if we talk about the Param Shakti, so Param Shakti is basically a supercomputer, right? Supercomputer. इसमें थोड़ा लैग आ रहा है. That's a supercomputer which has been developed by CDAC and it has been inaugurated in IIT Madras. So this is very important. So Param Shakti क्या है? Basically it is a supercomputer which has been developed by CDAC and it has been inaugurated in IIT Madras. Moving on, so Saral.
So Anusandhan National Research, ANR, ANR, Anusandhan National Research. They have inaugurated SARAL. So SARAL basically stands for Simplified Automated Research Amplification. Moving on, Rift Valley virus. That's in so it has like WHO ने इसके regarding बोला है Rift Valley virus. So it is in Mauritania and Senegal. Now this is important. So Sentinel 6B. So all the news that are related to space, they are somewhere very important. Right? So this one, Sentinel 6B. ये पहली बात क्या ये है क्या? So this is a satellite which is going to be used as a global ocean monitoring satellite, right? And it has been launched from California. और इसमें तीन एजेंसीज काम करी है. एक तो नासा हो गया हमारा, ठीक है, जो अमेरिका की है. Another one is National Ocean Atmospheric Administration and ESA, that's the European Space Agency. So these three organizations are working and they have launched this satellite that is going to be used in global ocean monitoring from California, and the name is Sentinel 6B. सो आदित्य L1 हमें पता है कि हमारा एक सोलर मिशन था जिसमें हम लोग लैग्रांज पॉइंट में जा रहे थे, राइट? सो दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट. मूविंग ऑन, एस्ट्रोसैट. सो एस्ट्रोसैट इज बेसिकली फर्स्ट फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस. इट इज बेसिकली अ फर्स्ट so it is India's first space observatory. So this is an observatory and this was launched by PSLV C30 from Satish Dhawan and the name is Astrosat. This is very important. That's the Meta has launched. Meta has launched one initiative that's called Project Waterworth. Now, what is Waterworth? So, in under this particular project, two cities have been selected. That's first one is Mumbai and another one is Vizag. That's the Vishakhapatnam. Or under this particular project, that's the Waterworth. क्या होगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वो बिछाई जाएंगी ओशंस में, राइट? एंड फॉर दैट Meta has selected these two cities, Mumbai and Vishakhapatnam. Mission Drishti. So Galaxy EYE's first satellite, first multi-sensor Earth observatory. So Mission Shakti, Galaxy Eyes first. This is I don't think it is very important. This one is very important. So रशिया ने अभी एक अपनी एक unmanned underwater vehicle, that's Poseidon. That's Poseidon. And important thing to note is that this is a nuclear powered underwater unarmed vehicle. And the name is Poseidon. This is very important. Sea Buckthorn and Himalayan Tartary book. So इसको हमने like they will be used in Crew 11 NASA's mission. And ये चीज कहाँ पाई जाती है? Basically, it is found in Ladakh's cold desert. This is Mount Elbrus. Mount Elbrus is in news because this is one of the highest mountain of Russia, and this is a part of Cascas mountain range. This is important. That's the first solar powered surveillance drone. This is a medium altitude persistent surveillance system. और इसको बनाया किसने? So this is being made by New Space New Space Research Tech ने बनाया है हमारा फर्स्ट सोलर पावर्ड सर्वेलेंस ड्रोन. मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये किसने बनाया? डीआरडीओ ने एंड आर्मी. सो दिस इज किस तरह की मिसाइल है? दिस इज अ फायर एंड फॉरगेट kind of a missile and it is an anti-tank missile and it is man portable, that is a person can carry it
Another one is long range anti ship hypersonic glide missile, LRASHM, LARSM, and this is being made by DRDO और किसके लिए है? ये चीज इंपॉर्टेंट है. It is for Indian Navy. So as we know that यहाँ पर एंटी शिप की बात हो रही है, तो we know that when it comes to ships, so हमारा इंडियन नेवी ही उसको डील करता है. मूविंग ऑन, INS अर्नाला. अर्नाला इज बेसिकली क्या है? ASW, दैट्स एंटी शैलो वॉरफेयर, एंटी सबमरीन शैलो वॉरफेयर, and this is made by GRSC. So GRSC is Garden Research something, and it is located in Kolkata, right? Garden Garden Reach Shipbuilders. Moving on. So yeah, as we know that recently RDC ki on 26 January RDC parade was there, right? So इसमें chief guest कौन आए थे? First was Antonio Costa, and another one was European Union Commissioner Ursula. So this is very important. These two names are very important. Antonio Costa and another one was European Commissioner Ursula. अब इसका जो हमारा आरडीसी का इस बार का थीम था, दैट वाज 150 इयर्स ऑफ वंदे भारत, वंदे मातरम, सॉरी. और इसमें जो बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट है, नाउ व्हेन इट कम्स टू कंटिंजेंट, दो होते हैं. एक तो आर्म्ड फोर्सेस के उसमें, एंड अनदर वन इज सीएपीएफ, राइट. सो आर्म्ड फोर्सेस में किसको मिला था? नेवी को मिला है, राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस गॉट द बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट. इसमें एक और स्पेशल अवार्ड हुआ था, एंड दैट वाज गिवन टू सीपीडब्ल्यूडी. नाउ व्हेन इट कम्स टू टैब्लो की, किसको बेस्ट टैब्लो को किसको मिला था? सो इट वाज महाराष्ट्र. उनका उनका था गणेश 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 उत्सव. Second one was Jammu and Kashmir. It was related to handicraft, and third one was Kerala, and it was displayed water and metro. So इससे आत्मनिर्भर भारत का भी शो करता है ये सब चीजें. Now tableau, so best tableau for the central ministry. It was given to Department of School and Education. Now we have discussed this thing, right? So ये हमने डिस्कस कर लिया था ग्रीन हाइड्रोजन हब. इसका हमें तीन ports को मिला है. So first one was Deen Dayal, another one was Chittambaram, that's in Tamil Nadu, and Paradip, that's in Odisha. And we have decided that by 2070 we would be net zero. So that's a very big commitment, and we are working towards it. Right. So this is another news, that's Mount Leo Taki Taki. This is in Indonesia, and it also erupted recently. So this is also very important, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस सी लाइक यूपीएससी पूछता है, एंड इट कैन आस्क कि माउंट गुब लाइक दैट वन, द गुबली, माउंट गुबी, माउंट हाईली गुबी, ये कहाँ पर है? इट इज इन इथोपिया. एंड माउंट माउंट लाकी लियो लाकी, it is in Laki is in Mount Laki is in Indonesia, while Mount Haibigui, Haile Gubi in Ethiopia. Moving on, this is very important, and that is ki Nigalo Reef. So Nigalo Reef is basically largest fringing reef, और ये this was a part. This is a part of UNESCO's. It is listed in UNESCO, right? And this is very famous for whale shark. But the reason why it is in news is because around 70% of corals that is found in this
Ningalu Reef. It is almost dead. So this is very important. Another news is that Bitra Island. This is basically found. This is a part of Lakshadweep Island. और ये हमारा न्यू नेवल डिटैचमेंट फैसिलिटी होगी. Right? This is also important. Now moving on, GI tag. So हमने अभी रिसेंटली अभी एक GI टैग का देखा था पीछे. That was related to Sikkim's musical instrument. Right? They also got the GI tag, right? So this is second one. That's GI tag. That's the Karbi Anglog Ginger of Assam. It is being exported to London. Or this particular variety of ginger is found in Singhasan Hills. So Singhasan Hills, ये important है. And what kind of cultivation is usually seen? It is shifting and tila farming is noticed over here. So this is important, that jhum cultivation. Jhum cultivation is basically seen in the northeastern part of India, right? जहाँ पर ये basically क्या होता है कि ये like there is a land, right? हमने उसमें कुछ फसल बोई है, right? We once we get that, जहाँ हमें वो फसल मिल जाती है, so instead of cutting or doing, so basically what these people do is they simply burn that uh, land and crops जो भी होते हैं, रेसिड्यू जो भी बच जाता है. So this is what झूम cultivation is. अभी एक न्यू वैरायटी ऑफ लॉबस्टर इज फाउंड इन लक्षद्वीप अंडर द ओशन डीप ओशन मिशन एंड द नेम ऑफ इट इज समुद्रगिरी. Right. So this is Samudra is basically a type of a lobster and it is found in Lakshadweep under the deep ocean mission. Moving on, Flamingo Festival. So Flamingo Festival हमारा कहाँ देखा जाता है? It is seen in आंध्र प्रदेश. और आंध्र प्रदेश की कौन सी बर्ड सेंचुरी में? नेला नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी. इट इज फाउंड इन नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी. और अगर जब हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमें एक और चीज याद आनी चाहिए, दैट इज कि in Andhra Pradesh only we have this Pulicat Lake and this is second largest saltwater lake. The first कौन सी है? First is Chilika Lake, right? So this is an important thing. Now moving on to the Betla National Park. So जो Betla National Park है, it is the first AI enabled nature center, right? और ये कहाँ पर है? ये हमारा है झारखंड में. This is in Jharkhand. Moving on, IUCN Congress 2025. This was held in Abu Dhabi, Dubai, and first Indian Dugong Conservation Reserve, which is in Park State. So this is uh, declared, basically we can say. And IUCN का headquarter किधर है? IUCN का headquarter is in Gland, that's in Switzerland. Moving on, there's a NH 57. It has started. NH होगा या NH होगा 47 होगा. Yes, waterway होगा या फिर I can't recall. Either this is WH waterway. This is on River Kapili, which is a south bank tributary of Brahmaputra River. Moving on, Swachhta Pakhwada Award. Swachhta Pakhwada Award is given to Paradip Port. Paradip Port was in news earlier also for green hydrogen. राइट. सो उसके लिए और उसमें हमें तीन हमारे पोर्ट्स थे. कौन कौन से थे वो? फर्स्ट वन वाज दिस कांडला पोर्ट, दैट्स ऑफ गुजरात, राइट. सेकंड वाज वो चिदम्बरम पोर्ट ऑफ तमिलनाडु एंड थर्ड वन वाज पारादीप पोर्ट ऑफ उड़ीसा. और पारादीप पोर्ट को ही हमारा स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड भी मिला है because of three initiatives that they have taken. First is Jan Bhagidari, second is Ek Ped Maa Ke Naam and Safai Mitra. Right. Moving on, Asia's largest civil aviation event was held in Hyderabad. In which airport? It was Begumpet Airport. And the event that was there was Wings India 2026. Moving on, the very first hydrogen water taxi was started in Varanasi.
moving on, this is a Swadesh. Swadesh basically stands for sea water desalination plant. और ये कहाँ पर देखा गया है, मतलब किसने बनाया है? इट वाज मेड बाय डीआरडीओ। और रीजन क्या है कि बेसिकली जो भी हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, दे गेट पोर्टेबल पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ द बिकॉज the water is not that good, so for them they have made a portable seawater desalination plant. This is important. That's Indian National Center for Ocean Information Service. Three new ocean. First one is Jeli Samudra 2.0 and SIVAS. So SIVAS basically stands for Seamless Information Virtual Analytics. और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये हो गया था हमारा अर्नाला। अर्नाला इज बेसिकली एंटी सबमरीन शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, नॉट एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट। ये हमारा किसने बनाया? जीआरएससी, दैट्स गार्डन रिसर्च, गार्डन रीच। और ये कहाँ पर? हमारा कोलकाता में। और शायद से कमीशन, इट वाज कमीशन इन वाइजैक, आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे दो भूटान से रिलेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। फर्स्ट इज पुनसांगचू Putsangchu 2, and another one is Dorzelung Hydro Power Plant. So जो डॉर्जे हाइलुंग पावर प्लांट है, ये का ये पीपीपी, दैट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत है। while this one is Putsangchu 2, this is 1020 megawatt हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि भूटान में ही है। और द डिस्ट्रिक्ट इज वांगड्यू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया डवास कॉम्पैक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सो अ ड्रग टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस। एंड डब्ल्यूटीओ ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया के जो एफर्ट्स थे फॉर अ ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, सो दैट जो भी, सो इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू द पुअर नेशंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट साइक्लोन मोंथा। सो साइक्लोन मोंथा कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था। एंड दिस वाज नेम्ड बाय थाईलैंड। किसने नेम कराया इसको? थाईलैंड ने कराया। और द इसका मतलब क्या होता है? मोन्था का इट इज फ्रैग्रेंट फ्लावर्स। और ये क्या था? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो भी हमारे साइक्लोन्स आते हैं बेसिकली इन द बे ऑफ बंगाल, दे आर ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और हमें ये भी पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लोन्स कि साइक्लोन्स को क्या, कौन सी जगह पे क्या कहा जाता है। सो हरिकेन, फॉर एग्जांपल विली विली, so this is in Australia, right? If we talk about this typhoon is basically in the southeast China, right? हरिकेन्स कहाँ पर होते हैं? ये अमेरिका साइड में होते हैं हमारा, ठीक है। और बस यही है। नाउ ओमान को दे हैव Oman is basically selected as for UNESCO's Man and Biosphere Conference जो भी होगी, it has been nominated for that Man and Biosphere. This is very important कि जो फर्स्ट प्लाऊ इज बेसिकली क्या है? प्लाऊ इज अ पैसिफिक नेशन कंट्री जो जिसने क्या करा है? फर्स्ट अंडर वाटर इंटरव्यू करा है। क्या करा है? फर्स्ट अंडर वाटर इंटरव्यू करा है। और उसके प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट विप्स विप्स नाम है। एंड अनदर वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी रिसेंटली one new member joined International Solar Alliance, or the name of that member is Moldova, and it has become the 107th member. एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि अभी एक कंट्री ने दे हैव स्टार्टेड यूजिंग यूरो
It has started using euro. उसका नाम है बल्गेरिया. So uh, Bulgaria has become the 21st nation which is going to use what? It is going to use euro currency. ठीक है. ज्ञान भारतम. So we know that ज्ञान भारतम के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारा जो भी हेरिटेज है, जो भी हमारा लिटरेचर है, उसको प्रिजर्व कर सके. और हमने अभी एक नई यूनिवर्सिटी, दैट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, उसको वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है? इट इज इन न्यू दिल्ली. दिस इज इम्पोर्टेंट. बस्तर पंडूम फेस्टिव, जगत जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में हुई है. अब बस्तर ओलंपिक्स भी हुए हैं. इसमें 500 एक्स माओइस्ट, राइट, they have participated in it. And Bastar Olympic, or this Bastar festival, it is held in Chhattisgarh, right? Or Prison Murmu भी गई थी शायद से. So, and which all come, which all tribes are there? So Gond tribe is there, Maria, Muria tribes are there. Oldest known art, that's a Liang Metard, and it is in Mona Island, that is in Indonesia. Lak Lakundi, Lakundi, Karnataka, Neolithic site है, which we are trying to inculcate and add into the UNESCO's World Heritage. This is not very important. This is important कि इटली को क्या मिला है यूनेस्को की तरफ से? नेशनल दस कुजीन, कुजीन कुजीन के लिए उसको वो मिला है, राइट. दिस इज इम्पोर्टेंट दैट हस्ता सिमहस्ता कुंभ. सिमहस्ता कुंभ क्या होता है? इट इज हेल्ड एवरी 12 years. और ये कहाँ होता है? इट इज हेल्ड इन उज्जैन. और कौन सी नदी के किनारे? इट इज नियर द शिप्रा रिवर. और ये होता कब है? जब जुपिटर लियो कॉन्स्टलेशन, एक फॉर्मेशन होती है, इसमें आता है, तब होता है. रॉयल भूटान बुद्धिस्ट, इट इज इन राजगीर बिहार. सरस, सरस stands for sales of articles of rural artisans. So इसकी जो full form है, it is very important. This is a livelihood fair that of 2025. और ये कौन ऑर्गेनाइज कराया है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम में. और 400 लखपति दीदी, ठीक है, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट. अभी कितना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सर्वज्ञ कुशवाहा, ये 3 साल का. He is 3 year old, and he has become the like youngest FIDE. Like basically, what is FIDE? It is a very high rank in chess. So he he has become the youngest, like we can say, master or top ranker. He's only 3 years, 3 years of age. Karnataka Bharat Gaurav Train. This is a pilgrimage tourism. Not very important. Ital Itlin Hydropower Project. Talon Hydropower Project. This is in Arunachal Pradesh. Drip and Talo rivers, which are in Dibang Valley. So तालो, ड्रिप एंड तालो रिवर्स के ऊपर बन रहा है ये वाला प्रोजेक्ट. कौन सा? इटालन, इतलन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ऑपरेशन संकल्प. सो व्हाट इज ऑपरेशन संकल्प? इज एन ऑपरेशन ऑफ इन a नेवी, जिसके अंदर what Indian Navy is trying to do is that they are focusing on strengthening the security and safety of Indian Oceanic region. That's basically we can say the Indian Ocean region जो भी है ये. They're trying to strengthen the security. और ये security किसके लिए? Merchant vessels. And this includes Gulf of Aden and Gulf of Oman. So Gulf of Oman, when we talk about the Gulf of Oman, so ये Gulf of Oman से हमें एक और चीज याद आनी चाहिए, and that's the Strait of Hormuz.
And why Strait of Hormuz in news? Because it has been closed. यार एक तो चल नहीं रहा है Hormuz. इसकी spelling mistake हो रही है Hormuz. So basically, this is in why is it in news? Because of Israel, US, Iranian conflict, under which Iran has blocked this particular strait, and due to which the oil prices are going up, and many countries like India, they are facing the LPG shortage issue. Yeah. Now, if we talk about National Highway 45, जो National Highway 45 है, it has become the first national highway for wildlife safe road, right? And this is in Madhya Pradesh. और कौन सा टाइगर रिजर्व? दैट्स द वीरांगना दुर्गा दुर्गावती टाइगर रिजर्व एंड नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अभी जो एक there was recent a report was published from the named as Central Groundwater Report. और इसमें क्या पाया गया कि द आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश has stopped in terms when it comes to आ रहा हूँ हाईएस्ट पीक नाइट्रेट कंसंट्रेशन, जो इनकी जो ग्राउंड वाटर में हाई वेरी हाई नाइट्रेट कंसंट्रेशन वाज फाउंड, राइट? सो आंध्र प्रदेश हैज स्टॉप दैट, व्हिच इज वेरी कंसर्निंग थिंग. और जो दिल्ली की पोजीशन रही है, इट हैज बीन फिफ्थ. ठीक है. ऑपरेशन मिलाप हुआ था. ऑपरेशन